Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरव धवनलाल। Thank you, Vishal, and A.K. sir, welcome to the studio. A quick look at the headlines. Key domestic stocks witnessed gains of around 0.5%. Sensex closes above 66,700 points. Nifty settles above the 19,750 level. Over 1.24 lakh farmers benefit from paddy procurement during Kharif marketing season 2022-23. The National Coal Index declines 33.8% in May this year, indicating a strong supply of coal in the market, and Brent crude hovers around $82.75 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में करीब 0.5% की वृद्धि दर्ज। सेंसेक्स 67,700 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 19,750 के स्तर से ऊपर पहुंचा। खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान खरीद से 1,24 लाख किसान हुए लाभान्वित। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में इस साल मई महीने में 33.8% की गिरावट। बाजार में कोयले की मजबूत आपूर्ति का संकेत। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $82.75 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम की शुरुआत शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त कमजोर संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में आज करीब 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,700 अंक से ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,750 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 66,707 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 98 अंक बढ़कर 19,778 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.34% चढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.22% लाभ में रहा। Key domestic indices today witnessed gains of around 0.5%. Both indices surged even as cues from global stocks were negative. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 66,700 points. The Nifty at the National Stock Exchange ended above 19,750 level. The Sensex climbed 351 points to finish at 66,707. The Nifty also rose 98 points to settle at 19,778. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.34% and the small-cap index gained 0.22%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 firms appreciated while 10 declined. Larsen & Toubro climbed 3.3%, ITC surged 2.1% and Britannia gained 2%. On the other hand, Bajaj Finance slumped 2.3%, Bajaj Finserv declined 1.4% and Mahindra & Mahindra fell 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors logged gains while 2 witnessed losses. The telecom sector index advanced 2.3%, capital goods gained 1.6% and the realty index rose 1.2%. On the other side, the consumer durables index declined 0.3% and the services index fell 0.2%. The overall market breadth was positive as shares of 1,839 companies declined and 1,708 companies advanced. A total of 149 shares remained unchanged.
और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 99 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्देशीय कारोबार में 101.14 पर चल रहा था। अब भट्टाचार्य जी, सबसे पहले बात शेयर बाजार की करें तो 3 दिन से जो गिरावट दिख रही थी वो आज उस पे जाकर के रोक लगी है और 351 अंक का उछाल हम देख रहे हैं। और इसके बावजूद कि वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का रोक है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय शेयर बाजार, घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। क्या प्रमुख वजह आप देख रहे हैं इसका? देखिए, आज जैसे आपने कहा कि जो पिछले 2 सत्र में 1200 पॉइंट की जो क्षति हुई थी, जो हानि हुई थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है। 1200 पॉइंट नीचे आया है, अब 350 पॉइंट वापस आया है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि जो दो सत्र के पहले जो स्थिति थी वो अभी तक नहीं वो रिकवर हुई थी। वो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में फेड की डिसीजन को लेकर नर्वसनेस है। बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का और भी इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज किया जाएगा। उससे जो ग्लोबल मार्केट्स उसी कारण थोड़ा बहुत नर्वस में है। पर जो हमारे मार्केट में जो 2-3 जो स्टॉक स्पेसिफिक जो कारण जो हमें दिख रहे हैं, वो देखेंगे तो आप जैसे L&T का है। L&T का जो बाईबैक डिसीजन जो है उससे काफी स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। और L&T काफी वेट वाला स्टॉक है, उसमें करीबन 3.5%, क्योंकि वो 3,000 रुपए के स्टॉक का है। करेंटली उसका प्राइस है 2600 रुपए। तो बाईबैक के डिसीजन से नेचुरली जो खरीदारी हो रही है उससे भी मार्केट बढ़ गया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो बैंकों के स्टॉक्स जो हैं उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है। पर उसी तरह अगर आप कोई प्राइवेट NBFC कंपनीज को, बजाज फिनसर्व को देखेंगे, उसमें जियो के आने से थोड़ा बहुत एडवर्स इंपैक्ट हुआ है। तो आज की जो रिकवरी जो हुई है वो मैं समझता हूं कि काफी सारे डिफरेंट तरीके के जो स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट से स्टॉक मार्केट का ताल्लुक रहा है। और जो रिकवरी की जो बात हुई है, 1200 पॉइंट गिरने के बाद 350 पॉइंट का जो रिकवरी हुई है, मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट में ऐसा ही वॉलेटिलिटी चलता रहेगा। पर जो रेंज जो है इसी तरह रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप कैलेंडर 1 जनवरी से देखेंगे तो अगर इक्विटी इंडिसेस जो हैं वो 8% की जो इंक्रीज जो दिखी है हमें, तो मैं समझता हूं वो पार फॉर द कोर्स है। वो ऐसे इसी तरह चलती रहेगी, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहेगी। That is how it will go on. AK sir, wanting to bring you back to the federal rate and the expectations that you had, you said there's nervousness in the market. Yeah. Now, in the larger picture, do you think this is a kind of a trend which is continuing, or has the commentary come out to say, will this be the last one? Will there be more? And is the market now going to respond, especially FIIs, differently than the first few hikes that happened and the next one? You see, if you look at the Fed, the way Fed responded to what they thought was inflation going out of control situation, they reacted very swiftly and with a steep curve. So in a matter of 1 year, they raised the interest rate from a band of 0 to 0.25% to 5%. Now that while did have an impact on the inflation level, which came down from 9% to around 4 or 3.5 or 4%, but it did also result in casualties in the financial sector. As you know, that some of the banks went down under. So today Fed is a little more cautious and conscious of giving its rate hike cycle some sort of a pause. So, but in spite of that, the expectation is that there will be a 25 basis point increase, which will be announced later in the evening, India time. That will take it to 5.25%. Okay. But this does not mean that the Western world, all the woes are over. Inflation is yet to come back to the American US target of 2%. European inflation target is nowhere to be reached, but there are early signs of softening demand conditions. Even though the IMF
outlook is saying that there is a 0.1 percentage point increase in their estimate, but the current demand outlook does not seem to be very, very bright. So therefore, the Western developed markets are still showing signs of softness, whereas the Indian story relatively is looking better. जी, आपने आईएमएफ का जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कल ही 2024 के लिए वित्त वर्ष के लिए आईएमएफ ने भारत के वृद्धि अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाया है और 6.1% कर दिया है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कितना मजबूत संकेतों की तरफ इशारा है? देखिए, ये जो उनका जो एस्टिमेट है, जो आईएमएफ का एस्टिमेट, ये अभी भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेट है वो 6.5% का है। तो मैं ये समझता हूँ आईएमएफ अभी भी आरबीआई के कंपैरिजन में, तुलना में अभी भी थोड़ा बेरिश लग रहा है मुझे। पर उनका मानना ये है कि अभी भी जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स जो हैं, ग्लोबल जो मार्केट जो कंडीशन जो है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो इम्पैक्ट होती है इंडिया की, सो इसीलिए उन्होंने 6% से 5.9 से उन्होंने 6.1% का जो इंक्रीज किया है। काफी कॉशियस अभी भी उनका आउटलुक है। मैं समझता हूं कि अगर जो करंट जो डाउनसाइड रिस्क जो है, अगर देखिए वेदर का जो रिस्क है, जो मॉनसून का रिस्क जो है, या ग्लोबल स्ट्रेस लेवल, ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो यूक्रेन रशिया का वॉर, ऑयल प्राइस थोड़ी बहुत दाम बढ़ने की जो आशंका हमें दिख रही है, ये अगर जो रिस्क्स और भी खराब और भी डेंजरस न होए तो मैं समझता हूं 6.1% ग्रोथ रेट तो मुमकिन जरूर लगता है। When we look, Ekisa, at the market, and we also know that, we are depending a lot on FIIs to say that they're looking at India as a stable market. We've overcome a fair number of crises very well. Do you think there could be, with the rate at which, so of course we have our corrections, but the market is definitely on an upward trend, like a bull run is on its way, is happening. Do you think there's a doubt that there could be an international sentiment that the Indian market is overinflated? Well, if you look at traditionally, if you look at a larger scenario, if you see the global growth rates and the differential they have with the Indian growth rate, I don't see they are out of sync. Okay. Traditionally, there's always been a differential of 3 percentage point. So if the world growth rate is going to be 3%, we will be growing by 6 or 6.5%. So that 3 and 3.5% differential is being maintained. So that is not out of sync. If you look at total the Indian stock market capitalization, now that is close to India's current year's potential GDP, which is around 300 lakh crore. So it is also not way out of that overall country's GDP market situation, which if you remember 2007 when Indian stocks were really, really high and then there was a collapse took place. At that time, the stock market capitalization was way above the country's GDP levels. So I don't think at this point in time, yes, the PE ratios are slightly elevated, but they are not yet at a position that you will call the Indian markets too expensive. There are sectors wherein they are waiting to be picked up by savvy investors. There are sectors which still have got some upside left, things like pharmaceuticals, travels, the electronics goods particularly, the manner in which many of the global giants are trying to relocate their plants in India. So these are all positives. So the markets I don't think is irrational right now. They are reflecting the relative prosperity that you see in the Indian markets. जी, आपने कई सेक्टर्स की बात की। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं वो काफी उत्साह बढ़ाने वाले नतीजे हैं, और अब जिस तरीके से आगामी अब एक त्योहारी सीजन भी आएगा, ऐसे में आप ऑटो स्टॉक्स को आप इसमें क्या संभावनाएं देख रहे हैं? ये ऑटो स्टॉक्स में दो तरफ की पुल्स एंड प्रेशर्स आ रही हैं। एक तरफ तो जो ट्रेडिशनल जो
जो IC जो इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड जो हमारी ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो हैं, उसका जो डिमांड अभी भी अपसाइड में है, चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और उसी के लिए मार्केट में भी जो उछाल दिख रहे हैं आप। पर उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एडॉप्शन जो हो रही है, वो एक नई सेक्टर की एक शुरुआत, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को भी दिख रहा है। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ देखें, मैं समझता हूं कि जो ऑटो सेक्टर जो है, और जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्शन की जो पेस जो है इस वक्त, वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजिकली ऑटो इंडस्ट्री जो प्रिपरेशन करना चाहिए था कि इस न्यू टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन के ऊपर, ये काफी सही तरीके से ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा है। और स्टॉक मार्केट की जो अभी जो आपने जो स्ट्रेंथ देखी ऑटो स्टॉक्स में, वो उसी को दर्शा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए और एग्जिस्टिंग जो IC बेस्ड इंजन की गाड़ी जो बेच रहे हैं, वो उसको डिमांड को भी रखते हुए एक काफी संतुलन सा बना हुआ है, और वही स्टॉक मार्केट में दिख रहा है हमें। Your views, sir, on the IT sector. We know that global demand is not likely to go through the roof very soon. It's still, people are still waiting and watching, and inflation is yet to come under control. The international markets are really not on a bull run or up on a surge. How do you think the IT stocks in India are going to see the future? Well, IT stocks, to be honest with you, is going through a phase of uncertainty. One is it is still to come out of what I would call irrational exuberance in terms of hiring during the COVID time. So you are seeing a situation where IT companies are facing difficulties in absorbing the workforce that they had hired and finding them adequate job. As a result, many IT companies, except one or two, are not that bullish on their guidance. So that is also impacting the sentiment on IT sector. And the second big, the elephant in the room, is the rise of artificial intelligence, which is going to impact first, forget about any other sector, the IT sector itself. Now, how IT sector copes up with that artificial intelligence challenge in the days to come, in the months to come, is something that is going to be impacting the market as well as the industry sentiment on the IT sector. There are all kind of forces at work. There are regulatory environment. What kind of environment will it be? How artificial intelligence will be allowed to operate in the IT sector? What kind of job prospects will be impacted in the IT sector again because of artificial intelligence adoption? So these are all, the known unknowns, I would say. And when you are facing, the industry faces the known unknowns, the stock market will continue to reflect that nervousness about that sector. So in the services sector is a huge area for our exports. They really beef them up. How do you think that AI is actually now, all this is really going to really affect our exports also? Well, you hit the nail on its head, because if you look at the first quarter's performance, what we saw till April this year, we saw services exports in April going up by 26%. But if you look at the services exports in May and June, they have come down to less than 1% in each of these months. So there is a clearly sudden deceleration in service exports, and this includes service exports undertaken by those global capacity centers. Now suddenly the GCCs are not showing the same robustness in their exports that they were showing for much of the last financial year until April. So merchandise goods exports is a different story. It reflects the weakness in the global markets. But services exports, which is to provide tremendous cushion to India's overall trade account, is now showing signs of weakness unless that trend gets reversed. And my feeling is that trend is not likely to be reversed very easily, because services exports are also going to be impacted by these technological changes and disruptions caused by artificial intelligence.
घरेलू शेयर बाजारों के बाद अब बढ़ते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की ओर। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से पहले आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.6% की हालांकि बढ़त देखी गई है। उधर दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% के नुकसान के साथ बंद हुआ है। हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% फिसल गया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% की गिरावट में रहा है। हालांकि जापान का निक्केई बिना किसी उतार चढ़ाव के लगभग सपाट बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान नुकसान में चल रहे थे। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 40 1.7% की गिरावट में चल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.7% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था और लंदन का FTSE 100 0.6% नीचे चल रहा था। A quick look at the US market. The tech-heavy Nasdaq closed higher yesterday before earnings reports from mega-cap technology companies Alphabet and Microsoft. The Nasdaq Composite Index gained 0.6%. The S&P 500 Index rose 0.3%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.1%. Agisa, quickly wanting to know, so we keep talking of how markets are valued, and we know internationally we are not expecting demand to be that high, and consumption being the greatest factor actually to push up an economy. Do you think any one of these markets is undervalued? There's fire left in any one of these, or are they being valued? Do you see potential in the Asian Union? Well, I think if you're looking at the Asian markets, I think the upside is definitely there. The potential is to be realized. The big worry in the Asian markets is the way China fares in the coming weeks, because China's recovery from COVID initially was euphoric, but suddenly it is petered out, and the early signals are one of sustained, continued dampness in terms of the rate of the economic activity. So if China can once again prove the world wrong and stages a remarkable recovery once again, I would say that the Asian outlook, including India's, which is doing reasonably well, would be better. So for a lay person to understand, because India also has people, we have an economy, it's like going gung-ho, and China also has similar things. What's the difference? Well, the difference is that in a time span of let us say 1 to 10, you want to do things in a gradual way, or you want to invest, expand at a pace, and then you slow down a bit. I think the Chinese situation is clearly you created the world's largest capacity in steel, largest capacity in everything. Suddenly, a little bit of depression in demand or decline in demand can upset your economy. So similarly, China's is going through that overcapacity situation where they have to come to terms with that. Whereas in India, it is still management of deficits. So I think we still need to invest more and more in infrastructure, which is what the government is trying to do through its budgets, successive budgets. The infrastructure investments have been going up from year to year. But we are still nowhere near removing our deficits. But China reached that point so fast that it reached a point where the slight disruption in demand upset its balance. Because it spread themselves really thin. Very you know thin. about that. Yeah. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान खरीद से 1 करोड़ 24 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। उपभोक्ता कार्य राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान 846 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। सुश्री ज्योति ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और सभी खरीद करने वाले राज्यों ने उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है। भट्टाचार्य जी, 2022-23 का जो मार्केटिंग सीजन है उसमें 846 लाख टन से अधिक धान की खरीद कितनी महत्वपूर्ण? बहुत जरूरी था ये प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अगर आप जो बफर स्टॉक की जरूरत होती है हमारे देश में, जो धान के बफर स्टॉक की जरूरत है वो करीबन 134 लाख टन की जरूरत होती है।
पर इस वक्त हमारी जो धान की जो स्टॉक्स जो है वो करीबन 360 लाख टन के करीबन है, और ये 846 लाख टन की बदौलत हम वो 360 लाख टन की स्टॉक में पहुंच सके। और हमें अगर देखें हम तो हमारी सालाना जो खपत जो होती है वो इस खपत के लिए काफी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि इस वक्त जो हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फ्री फूड ग्रेड में जाती है। तो और ये स्टॉक होना, धान का स्टॉक होना हमारे इसमें, ये सरकार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आपको मैं ये भी याद दिला देता हूं कि कुछ दिन पहले धान के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया गया था। इसलिए रोक लगा दिया गया था कि जिससे कि देश में हमारे अधिक से अधिक धान रहे, जिससे कि डोमेस्टिक सप्लाई सिचुएशन और डोमेस्टिक प्राइस सिचुएशन धान की कंट्रोल में रहे। Moving on to our next story, the National Coal Index NCI has shown a significant decline of 33.8% in May this year at 157.7 points compared to May last when it was 238.3 points. This indicates a strong supply of coal in the market with sufficient availability to meet the growing demand. The NCI for non-coking coal stands at 147.5 points in May 2023, reflecting a decline of 34.3% compared to May 2022, while coking coal index stands at 187.1 points in May 2023, with a decline of 32.6%. Moving on to oil prices now. Oil prices edged lower today as investors remained cautious ahead of an expected Federal Reserve rate hike later in the day and a spike in U.S. crude supplies. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.75 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $78.75 per barrel when reports last came in. और कीमती धातुओं के कीमतों पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 285 रुपए की तेजी से 59,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 160 रुपए की मजबूती से 74,930 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,013.80 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $24.90 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। A quick question on oil. So China being one of the major consumers of oil, that has really gone down. Where do you see which band prices would be stabilizing? Well, I think the oil prices will stay range bound because of the supply bottlenecks helped by the Russian Urals coming in and breaching that ceiling price. I see them moving in this range and not much volatility in the international crude oil prices till we hit the winter months. जी, A.K. भट्टाचार्य जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने साझा की हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Absolutely, thank you, A.K. sir. Now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks witnessed gains of around 0.5%. Sensex closes above 66,700 points. Nifty settles above 19,750 level. Over 1,24 lakh farmers benefit from paddy procurement during Kharif marketing season 2022-23. The national coal index declines 33.8% in May this year, indicating a strong supply of coal in the market, and Brent crude hovers around $82.75 per barrel. And that's it for now. Namaskar. Market Mantra.